Yeah, anyone? Sir, rational horizon. Rational horizon, very good. Sir, LHA. LHA, very good. SHA, sir. Right ascension. Okay, so what is this that I've drawn on the board now? Concentric circle है sir. So celestial sphere with equinoctial. Earth and the celestial sphere, huh? Earth in the center, and the celestial sphere with the celestial north pole on top, and the equinoctial. So if there is an observer here, on the north pole, and the point above is the celestial north pole, and if that observer goes beyond the north pole, celestial north pole, so how will he see the celestial sphere down below when he looks down? Someone who's standing here above the celestial north pole very high, and if he is looking down, from the top, what will you see? You will see something like this, with the pole in the center. Yes. Yes, sir. Yes, sir. And his vision will be bounded by the, what is this line? Equinoctial. Yeah, his vision will be bounded by the equinoctial, because he cannot see beyond this. After the equinoctial, the Earth starts curving inwards, so he can see only up to this point. So this is what he sees. What is this diagram called? Equinoctial horizon. Equinoctial horizon. Equinoctial horizon. What do we use this diagram for? What do we use this diagram for? To take pole as the center and take out GHA, LHA, SHA, RA. Yeah, for finding out the hour angles. For which you will see generally when you do numericals or other things, mostly we will be drawing this diagram and we will be doing this. We will be making G as a reference point, and from here we will be starting. G we said is one reference point. If I go in this direction, it is western longitude. If I go in this direction, it is what? Eastern longitude. So this is one reference point we have got. Very good reference point. What was the other reference point we had spoken about? First point of Aries. First point of Aries. First point of Aries. Very good. This is another reference point we have. Both we refer to both from the almanac. So if I go westward of Aries, what do I get? SHA. Sidereal hour angle. SHS. Sidereal hour angle. Very good. And if I go right of west point of Aries, RA. RA, right ascension. So SHA plus RA is equal to 360. 360. Very good. And then if I have an observer here, this is another reference point. So if there is a body anywhere, let us say there is a body, a star or something anywhere. If I go west from the observer, what angle do I get? LHA. LHA, local hour angle. Local because observer is always local. And if I go east of the observer, I get
Easterly hour angle. Easterly hour angle. Huh? So LHA plus EHA is equal to 360. 360 degree again, 360. once again. Very good. So you have understood this diagram very well. Okay. Now I will change the position of the observer a little bit. Now let us say the observer is here. You can see the second observer here. Yes. Where is the observer, in the northern latitude or southern latitude? If you look at this over here. Northern latitude. North. Yeah, this is the equator. This is the equator, is above the equator. And if I'll join a line from the center of the earth through the observer, what do I get? GP. Zenith. 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 I get zenith. Correct? Very good. Now, the important question, and for you to understand very clearly. If there is an observer here, the point above him is the zenith, and if he goes beyond the zenith and is looking down, from the zenith down, what will he see? And how much of the earth will he see? National horizon. Sir, sphere. He will see zenith in the center, and again he will see only half of the earth. Now he will see this half, because this half is hidden. Somebody on the pole could see this half. Somebody over here can see this half. Am I right or no? Yes, sir. Yes, sir. Because you can't see beyond half. Yes. No, the earth is curving. The earth is curving. So there is another diagram. We come here. So I have drawn another circle, and I said that if somebody is looking from above the zenith, what will he see? He will see Z in the center. Am I right? Yes, sir. You will see Z in the center. Yes. And the boundary of this circle we call the rational horizon. Rational horizon. So this is the rational horizon diagram. Wherever the observer is standing, he will have a, I will change the diagram, I'll make a bigger diagram. So let us understand this is the rational horizon diagram. And in this diagram, let me explain again. Even though when we are on the ship, we see a horizon, what do you call that horizon? Visible horizon. We call that a visible horizon. What is visible to us? But remember, you are on, as an observer, you are on top of the ship and you are seeing a visible horizon like this. When I do sextant altitude, I'll do this in more detail as a visible horizon. But the rational horizon passes through the center of the earth. So this observer, we will bring it down to the center of the earth later on. We will see what it is. But here, I want to make one point, that the rational horizon passes through the center of the earth. Every heavenly body, we said everything, all measurements are from the center.
so that this angle is 90 degrees. And every point on the rational horizon is 90 degrees from the zenith. From the zenith, 90 degrees here. From the zenith, 90 degrees here. So every point from the zenith on this is 90 degrees. Just like if we were standing on the pole above the North Pole, celestial North Pole, we could see the equinoctial, which was 90 degrees away. Yes or no? Yes, sir. Yes. Similarly, if you are Yes, sir. above the zenith, you will also see 90 degrees on either side. Wherever you are, if you are here as an observer, if you are here, if this is Z1, then you will see this half. So wherever you are, because ship is moving, we may be anywhere. So any question on these two diagrams? Now I will clean the board and make a rational diagram bigger and explain to you further. You have any question on this so far? Have you understood that when we go above the celestial sphere, we will be generally discussing two type of diagram, one from above the pole, equinoctial diagram, and one from above the zenith, wherever the observer is, which will be the rational horizon. Any questions, gentlemen? No. Okay. If no, then we will move on. I will draw a slightly larger diagram now. I think it's okay. So this is the rational horizon diagram. The observer is in the center. Every observer, when he measures from the compass, he will have a north direction, he will have a south direction, he will have a east direction, and he will have a west direction. What is this line NZS? What would you call this line? Principal vertical. So observer's meridian. Observer's meridian. Observer's merit. The meridian runs from the North Pole to the South Pole in a north-south direction, and any meridian passing through the observer is called the observer's meridian. Very good. What is WZE? Prime vertical. WZE is the prime vertical. Prime vertical is a vertical circle passing through the east and west points of the observer. Remember, vertical circle passes through the zenith and the nadir. I can draw a vertical circle like this. From here through the zenith, going beyond through the nadir. I can draw so many vertical circles, but there is only one prime vertical because this passes east and west points. So from the observer, wherever you see the compass 090 and 270, a line joining that is called the prime vertical. Any questions so far? It's very important that you understand this diagram very clearly. This is the basis of all your practical navigation. Sir, if we are denoting NZS as meridian, we can also denote WZE as parallel of latitude passing through the observer. WZE parallel of latitude passing through the observer will not be correct. WZE parallel, because parallel of latitude is a small circle. WZE is a great circle. I will explain that to you in a moment. We will come to that one. Okay. Why it is not a parallel of latitude. Okay.
Let us say you are in 40 degrees north latitude. Example, since you asked, if you are in 40 degree north, your parallel latitude will meet the horizon where? Parallel will meet on the horizon where? Everything has to be 40 north, whether it is the rising body or the setting body. Yes, sir. Yes or no? So that Yes, is sir. that's a different circle. That's a small circle. Yes, sir. That is not correct. Okay. So let me continue. Things will fall in place and you will understand. So NZS, observer's meridian, WZE, prime vertical, we have no problem. Now I said N is not the North Pole, S is not the South Pole. This is the direction. This is the direction. In the previous diagram, I had drawn the observer in the north latitude. And you could see little beyond the pole. If you notice that red circle which I had drawn, it was a little beyond the pole. If you want, I'll draw a small circle over here again. This was the equinoctial. This was the equinoctial. Here was the observer. This is the pole observer. So when the observer was seeing 90 degrees, he was seeing like this. Am I right? This was the diagram. And we said that the observer can see up to here, zenith, and this. The red is the rational horizon which I have drawn here. Which means what? That this pole, the north pole, is coming within the view of the observer. Yes or no? So can I say that this is the pole? Because then observer, when he's seeing like this, the pole is within his view. So if I bring this cone, this dome, if I bring the dome down onto the flat surface, I see like this. So I should be able to see the pole also, this one. Yes. If zenith is coming down to the center here, then the pole also has to come down here, no? This red circle I have transferred over here as the black circle. Any doubt in this one? Yes. Anyone? It's very important you understand all these things now. Okay. Here we notice that we are in the northern latitude. The observer is in the northern latitude. That means the equator is to the south of the observer. Yes or no? Yes. So the equator is to the south of the observer. So we draw the equator to the south of the observer. WQE is the equator or equinoctial, whatever you call it. Observer being in the northern latitude, the zenith is in the northern latitude, equator is south, so I draw the equator south. He can see 90 degrees, that means he can see beyond the pole. So the pole is here. This whole picture has been put on a plain paper. Yes? So far so good? Yes, okay, sir. now I will explain one small relationship to you. We said that NZ is equal to 90. NZ is equal to 90 degrees. This is correct? Yes, sir. PQ is also 90 degrees. Pole to the equator. Yes, sir. So PZ is common. PZ is common over here. Which means NP is equal to
ZQ. Have a look. I hope you're drawing the figure with me. If you draw, you'll understand better. NP is equal to ZQ. Yes or no? Which means that this distance NP is equal to the latitude ZQ. Yes, sir. NP is equal to ZQ is equal to latitude. Yes or no? Yes, sir. All of you have heard of the pole star Polaris. Yes, sir. It is situated where? At the North Pole. Yes. North Pole. So that is why it was very easy for the olden sailors to find the latitude. Daytime they would take the altitude of the sun meridian passage. Nighttime they would look at the altitude of the Polaris approximately or whatever if they could, or twilight time, and they will know what latitude they are immediately. Altitude of Polaris is your latitude. Is this point clear, gentlemen, to all of you? It's very important to understand. This will set your Yes, sir. thought process and you will understand the celestial sphere better. Is it clear? Yes. Okay. So now we will come to one more relationship. What do we call PZ? PZ is equal to 90 minus lat. Am I right? Yes, sir. PZ is equal to 90 minus latitude, ZQ is the latitude. This is called the colat. Colat. Earlier we have, in the previous session, we spoke about zenith distance. Zenith distance was what? 90 minus Altitude. Altitude. 90 minus altitude. Polar distance is 90 minus Declination. declination. So now we have PZ colat is equal to 90 minus latitude. So when we do the PZX triangle, it's very important for you to know these three expressions. Understand this very, very clearly. So I'll give you a few seconds to write down or absorb whatever you are seeing on the board before I move ahead. Okay, right. Now we will discuss rising and setting of bodies and what happens to them. A body which has got south declination will rise here. Yes. Right or wrong? Body which has got south declination will take this path. It will rise in the east and set in the west. It has got a south declination, so it remains south of the equinoctial. And it will make a path which is parallel to the equinoctial, like a great circle also, rather small circle. Is this understood or no? A body in the north declination will rise north of the equinoctial
and set like this. Yes. Yes, sir. See the difference between the two bodies. One having north declination and one having south declination. North declination, when it is rising, if you take a bearing, it will be less than 90, maybe 80 degrees here. South declination body, when you take the bearing when it is rising, it will be more than 90, maybe 115 here. When they are crossing the observer's meridian, where is the observer? Observer is at Z, correct? So what will be the bearing? What will be the bearing? Sir, 0. When both the bodies are rising, this is the pole, they are rising. And when they are on the observer's meridian, what will be the bearing? So 180. 180, 180. south, very good. They will be bearing south. And when they are setting, north declination will set north of in the northern hemisphere. So bearing will be, let us say, 280. And the body with the south declination will set over here. It will be less than 270, let's say 255 or whatever. So much is clear. Any questions, gentlemen, so far? So at observer's meridian, bearing would be 180 north, south. Bearing 180 means south, no? Okay. Sir. If bearing is 180, that means you're looking south, correct? Yes, sir. Now, in this case, the declination is south or declination is north, but less than the latitude. Declination is less than the latitude. If the declination is more than the latitude, then how will the body travel? The body will travel like this. It's very important, gentlemen, for you to understand this point now. If the declination of the body is more than the latitude, the body will travel like this. Yes. Yes, sir. Because when it crosses the meridian, then what will be the bearing? 0, 0. Bearing will be north, 0, 0, 0 degrees. Very good. So like this, you can figure out from the question if full data is not given. If the bearing is south while crossing the meridian, that means the body's declination is less than the latitude. If the body is pointing north in the northern hemisphere, when crossing the meridian, that means the declination is more than the latitude of the observer. Have you got this point, gentlemen? Sir, By the Sir, movement of the body, what bearing she rises, what bearing she sets on the meridian where she is in relation to the observer, you can know a lot about the body. Yes? What was your question? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दिया तो डेक्लिनेशन ज्यादा होगा तो बेयरिंग क्या होगी? Declination is the angle of the arc of the meridian or angle at the center of the earth between the two parallels. One is the equinoctial, other the declination of parallel of latitude, whatever. अगर declination latitude से ज्यादा होगा,
Here red one where we said the declination is less than the latitude. यहाँ आप लोगों ने बोला ये declination, ये तो पैरेलल चल रहा है ना इसके साथ. Z के नीचे क्रॉस कर गया तो declination लेस है latitude से. अब अगर ये declination ज्यादा है और Z के ऊपर क्रॉस कर गया, इसका मतलब declination latitude से ज्यादा है. Yes or no? Yes. Yes. एक बॉडी जिसका डेक्लिनेशन 0 है उसका पाथ ये होगा, ईस्ट में राइज करेगा 90 में, इक्विनॉक्शियल पे चलेगा और सेटिंग बेरिंग उसका होगा 270. इक्विनॉक्स के दिन इफ यू टेक द राइजिंग एंड सेटिंग बेरिंग ऑफ द सन it will be 90 and 270. Other days it will be either less than 90 or more than 90. ठीक है. We have another body which is moving. Can anyone tell me what type of body I'm talking about? If the declination of the body is very high. Heavenly body. If the declination of the body is very high. Circumpolar bodies. If the declination of the body is very high. ये इक्विनॉक्शियल से ये है डेक्लिनेशन बॉडी का, ब्लू लाइन, वेरी हाई डेक्लिनेशन, very high declination, we can call that body circumpolar because it will not set. But कितना declination वो भी एक calculation है. The body may be just touching the horizon or it may be just going below the horizon, जैसे green जा रहा है, ऐसे declination बढ़ते जाएगा तो होता जाएगा. Here what is happening? See, this is the body. Body is crossing the meridian here, x dash नहीं, x लिख देते हैं. एक और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ आप लोग थोड़ा समझ सकते हो. What have I written over here? PZ. What is PZ? 90 minus lat. PZ is 90 minus lat. वो lat. What is NP? You said. NP is equal to ZQ is equal to lat. ये हमने पहले लिखा था. Yes. NP is equal to ZQ लिखा था ना, जब PZ बोला था हमने, कॉमन है. NP is equal to ZQ is equal to the latitude. Yes or no? Yes, sir. तो इस केस में Px क्या है? From Q to X, let me call this X dash. From Q to X dash is equal to declination of the body. This is a declination. Yes. So what is Px dash? 90 minus declination. 90 minus declination is equal to polar distance. ठीक है. Is Px1 equal to Px? Yes. Is Px dash is equal to Px? Yes. Yes, sir. Because body declination is not changed, no? So it is the same. Circle बनाया उसने तो. So can I say Px is less than N, P is less than the lat? Can I say Px is less than Np is equal to less than the latitude? Yes or no? Yes. NP Sir, तो how the latitude है ना, NP is equal to ZQ, the latitude ऊपर लिखा.
Yes. Gentlemen, think about it, give it a thought. ये तो सर्कल ऑफ डेक्लिनेशन है, px डैश इज इक्वल टू px, बट px इज लेस देन np, वो तो दिख रहा है ना, अगर ज्यादा होगा तो बॉडी सेट हो जाएगा. px इज लेस देन np, तभी तो उसके नीचे है. यस. Yes, sir. तो np तो हम Yes, ऑलरेडी sir. बोल रहे हैं इज इक्वल टू zq इज इक्वल टू द लैटिट्यूड, np इज इक्वल टू द लैटिट्यूड. तो px is less than np and is less than the latitude also. इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए. I'm not hearing any answers. समझ नहीं आया? Yes, sir. दोबारा समझाऊं समझ में या? आ गया सर. पोलर आ गया, डिस्टेंस अगर लैटिट्यूड से कम है हाँ. तो वो सरकमपोलर बॉडी होगी, एक्सेलेरेशन बॉडी. Yes. So what are the conditions of a body being circumpolar? 1. Polar distance should be less than the latitude. That is one condition. Second condition, apply your minds. Second condition, Declination will be very high. declination same as latitude. Declination same as latitude of observer. Declination same as साउथ लैटिट्यूड वाले को नहीं दिखेगा क्योंकि 90 से ऊपर हो जाएगा ना ऑलरेडी. तो सर अगर कोई ऑब्जर्वर इक्वेटर पे है तो उस पे तो कोई बॉडी सरकमपोलर होगी नहीं. वो एक फॉर्मूला है, we'll come to that later when we do the numericals. But the condition is that the polar distance has to be less than the latitude and the latitude and declination has to be same name. अगर मैं ये साउथ लैटिट्यूड बना दूं या WQ से उल्टा बना दूं तो साउथ में वो सेम सिचुएशन दिखेगी लेकिन नॉर्थ में नहीं दिखेगी. तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, बट अगर बॉडी सर्कमपोलर दिख रहा है तो इसका मतलब लैटिट्यूड का नेम भी सेम है नॉर्थ पोल. जैसे एग्जांपल, ये बॉडी का 2 बार बेयरिंग 0 0 0 होगा. एम आई राइट? एक ऑब्जर्वर जो Z पे है, x डैश पे भी उसको 0 0 0 दिखेगा और x पे भी 0 0 0 दिखेगा. यस और नो? जब बॉडी x डैश पे होगी तो क्या बेयरिंग होगा बॉडी का? 0 0 0. सेम लाइक नॉर्थ डेक्लिनेशन मोर देन द लैटिट्यूड ना. ग्रीन वाला भी 0 0 0 था, यहाँ पे x डैश भी 0 0 0 होगा और x पे जब बॉडी दोबारा आ जाएगी घूम के तो क्या होगा? तो भी 0 0 0 होगा ना. तो तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि बॉडी x डैश पे है कि x पे है? अपर मेरिडियन पैसेज हो रहा है कि लोअर मेरिडियन पैसेज हो रहा है? कैसे मालूम पड़ेगा? एल्टीट्यूड से. हाँ, हायर एल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड से. वेरी गुड. यहाँ पर बॉडी का ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा. ऑल्टीट्यूड होराइजन से नापते हैं, यहाँ पर बॉडी का ऑल्टीट्यूड इतना होगा और इधर बॉडी का ऑल्टीट्यूड कम होगा, खाली इतना होगा. तो तुमको मालूम पड़ जाएगा ये अपर मेरिडियन पैसेज है, ये लोअर मेरिडियन पैसेज है. लो ऑल्टीट्यूड वाला लोअर मेरिडियन पैसेज क्योंकि पोल के नीचे है, होराइजन की तरफ है. होराइजन की तरफ माने नीचे. यहाँ स्टूडेंट उल्टा कर जाते हैं. तुमको P से नीचे दिख रहा है तो लोग इसको लोअर बोलते हैं, इसको अपर बोल देते हैं, लेकिन तुम तो सेंटर में हो. होराइजन उधर है. होराइजन के पास हाइट कम होगा ना, लो, यस और सर. होराइजन से ज्यादा ऊपर हाई होगा.
अपर, है ना? Yes, sir. So this diagram is very important for you to understand. अब मैं इसको थोड़ा मिटा के हल्का कर दूंगा और हम PZX ट्रायंगल की बात करेंगे। यहां पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। In this diagram I have explained to you how the bodies of different declination move. South declination, north declination less than the latitude, north declination more than the latitude, and a body which is circumpolar where the polar distance is less than the latitude. Upper meridian passage, lower meridian passage, upper meridian passage altitude, lower meridian passage altitude. इस चीज में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर ये एक्स पे अपर मेरिडियन पे ऑल्टीट्यूड होगा। बोलो, जोर से पूछा करो। सर ये एक्स एन से एक्स की जो एल्टीट्यूड होगा उस पे अपर एल्टीट्यूड होगा। एन, ये वाला एक्स और एन, ये लोअर Yes, sir. लोअर मेरिडियन पैसेज है, ये अपर है। ओके सर। एक सेकंड में मैं तुमको और एक दूसरी बात बता देता हूँ। एक्चुअली बोर्ड छोटा है ना, तो सारी पिक्चर्स मैं एक साथ रख नहीं पा रहा हूँ, वरना इजीली बता देता। अगर मैं दोबारा वो वाला बनाऊं डायग्राम, जिसमें ये जेनिथ है, ठीक है, पोल यहाँ पे था और एक सर्कमपोलर बॉडी जो ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो बताओ बिलो दी पोल क्या होगा? ये डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन है, इस तरीके से बना हुआ है। तो बिलो दी पोल वाला ऑल्टीट्यूड कम हुआ ना, बिलो दी पोल, क्योंकि होराइजन के पास है, और अबव दी पोल वाला ज्यादा ऑल्टीट्यूड हुआ होराइजन से। ये तो रैशनल होराइजन है, यस और नो? When you read this chapter again today and you draw the diagram, it will be much more clearer to you. नहीं तो कल दोबारा इसको थोड़ा बता दूंगा। Let me do the PZX triangle now. फिर पूरे एक फ्लो में जब आप पूरी चीज समझोगे या पढ़ लोगे तो you will have a much better idea. Some of you have understood very well. Some of you maybe have some doubts. So we can do it again. But I would request कि एक बार आप लोग इसको शाम को घर में पढ़ लो अच्छे से, बुक से भी और डायग्राम बना के भी। You have to do it in 3 dimension. Plus make a note of it. I don't know in your book what page this is. Can you see this Subramaniam's book? Figure drawing for astro calculations. इस बुक में चैप्टर 3 है, पेज 16-17. Can you see this? Yes or no? Can you see these diagrams A, B, C, D, E, F, G, H, I? Can you see this? Yes, sir. ये नोट कर लो। और उसके बाद there are 2 more drawings. वो GHI तक था ना ये वाला,
ये था GHI तक। उसके बाद मेरी बुक में पेज 214 चैप्टर ये है ऑल्टीट्यूड अबव एंड बिलो द पोल। सुब्रमण्यम का बुक, कैन यू सी दिस पेज? Yes, sir. ऑल्टीट्यूड अबव एंड बिलो द पोल, इस बुक में पेज 214 215 है। इसमें कंटिन्यूटी है उन डायग्राम का, JKLM। JKLM कितने डायग्राम हो गए? 4 6 10 और ये 3 13। ये 10 डायग्राम को भी तुम लोग आज स्टडी करो अच्छे से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए मैंने तुम्हें आज बता दिया है, उसमें सदर्न हेमिस्फीयर का भी है, सो यू कैन थिंक बोथ वेज। नाउ वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। ये डायग्राम को लाइटली मत लो, जो मैंने अभी बुक में दिखाया है वो डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर एक बार ये जो अपने रेशनल होराइजन का डायग्राम बनाया है, इसमें एजीमुथ का बता देंगे प्लीज, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये वाला डायग्राम, हाँ सर, इसमें एजीमुथ का बता दीजिए कि एजीमुथ कैसे होगा किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का। एक्चुअली द पॉइंट इज, यू नो, आप लोग मेरे साथ चलो, आप लोग मेरे आगे चलोगे तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज फिर स्पीड मेरी बढ़ जाएगी ना, फिर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आई विल कम टू एजीमुथ एंड एम्पलीट्यूड। तो या तो मैं एजीमुथ और एम्पलीट्यूड अभी बता दूं, या PZX ट्रायंगल। एक चीज बता सकता हूँ क्योंकि टाइम सिर्फ 10 मिनट अभी मेरे पास है, 8-9 मिनट है, फिर मेरी एक दूसरी क्लास भी है। तो PZX ट्रायंगल बता देता हूँ, जैसा बोलो, एम्पलीट्यूड एजीमुथ बोलना है तो वो बता देता हूँ। बट क्योंकि हम लोग जो बातें अभी कर रहे हैं वो PZX से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो इसलिए PZX कर लेना थोड़ा बेटर है। थॉट प्रोसेस जो है मेरा और तुम्हारा उसी डायरेक्शन में थोड़ा बेटर चलेगा, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस से देयर इज अ बॉडी एंड इट हैज रिजन, और यहाँ पहुँच गई है X, एक बॉडी यहाँ पहुँच गई है। उस बॉडी का डिक्लिनेशन क्या है? ये है डिक्लिनेशन, यस, अबव द इक्विनॉक्शियल। तो अगर मैं एक मेरिडियन पास करूं थ्रू द बॉडी which goes to the south pole, it is a great circle because it is a meridian. Px polar distance है 90 minus the declination, yes or no? Yes. Pz तुम्हारे सामने है, which is 90 minus the latitude. Pz तुम्हारे सामने है, which is 90 minus the latitude. And अगर मैं Z और X को भी जोड़ दूं, ये जेनिथ डिस्टेंस है। जेनिथ डिस्टेंस इज 90 minus the altitude. ये ग्रीन डॉटेड लाइन क्या है? ऑल्टीट्यूड है, अबव द होराइजन, द बॉडी अबव द होराइजन। रिमेंबर सारा कुछ डोम में है, रिमेंबर सारा कुछ डोम में है। उसको हमने फ्लैट सरफेस पे डाल दिया है। बॉडी राइजिंग इधर है, राइज यहां पर हुई रेड वाली, लेकिन यहां पर उसका ऑल्टीट्यूड क्या था? ऑल्टीट्यूड 0 था। ऑल्टीट्यूड बढ़ता बढ़ता ऊपर आ गया। कल मैंने बोला था मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड कहां पे होता है? When the body is on the meridian, it culminates. Maximum altitude, meridian passage. उसके बाद ऑल्टीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है till the body sets.
लेकिन इस बीच में क्या हो रहा है, बॉडी की बेयरिंग कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जिसको अभी अजीमथ हम बोलते हैं। बॉडी की बेयरिंग चेंज हो रही है। बॉडी की बेयरिंग राइजिंग में ये थी, ये पेन दिख रहा है मेरा इधर, बॉडी की राइजिंग बेयरिंग ये थी जो रेड डॉट है। जब तुमने ऑल्टीट्यूड लिया उसके अजीमथ ये हो गया। जब बॉडी ईस्ट हो गई, ऐसे करते करते यहां पर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, मेरिडियन पैसेज में बॉडी का बेयरिंग क्या होगा? 0 Around 180. 180 हाँ, 0 नहीं 180, क्योंकि ये इसका डिक्लिनेशन कम है लैटिट्यूड से। इट इज पासिंग बिलो द ऑब्जर्वर। मेरिडियन पैसेज में बेयरिंग 180 हो जाएगा, यहां पहुंचेगा तो बेयरिंग 270, और जब सेट हो जाएगी तो बेयरिंग 280 के आसपास। सो द बेयरिंग ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, द ऑल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका डेक्लिनेशन का पाथ सेम है। द डेक्लिनेशन रिमेन्स द सेम and the polar distance remains the same. Declination हल्का सा चेंज होता है, बट वो तुम एल्मेनाक इसलिए देखते हो, बट फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पस डायग्राम बनाने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं अभी डेक्लिनेशन कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। वैसे तो ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, शिप मूव कर रहा है, हम बोलते हैं ऑब्जर्वर स्टडी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस जेंटलमैन, ये PZX ट्रायंगल कैसे बना? डेक्लिनेशन से तुमको पोलर डिस्टेंस मिल जाता है, ऑल्टीट्यूड से तुमको जेनिथ डिस्टेंस मिल जाता है, DR लैटिट्यूड से तुमको PZ मिल जाता है। तो PZX ट्रायंगल एक बन गया तुम्हारे सामने, यस और नो? मैंने बोला था Yes. कि we have to merge the two systems to find our position. PZX ट्रायंगल से हम अपनी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मैं थोड़ा सा तुमको भी हिंट दे देता हूं। मेरे को डेक्लिनेशन कहां से मिला? एल्मेनाक से मिला फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, तो PX मिल गया मेरे को फॉर दैट टाइम। उसी समय Yes. जब हम साइट लेते हैं, हम घड़ी का टाइम नोट करते हैं ना, क्रोनोमीटर से क्यों नोट करते हैं? ताकि डेक्लिनेशन ले लें, और उसी से हमने ऑल्टीट्यूड ले लिया सेक्सटेंट से, उसको 90 माइनस किया तो हमको ZX मिल गया। हमारे पास DR लैटिट्यूड है तो PZX मिल गया। ये कौन सा ट्रायंगल है? प्लेन ट्रायंगल है या स्फेरिकल ट्रायंगल है? spherical. Because they are all three great circles. This is the meridian passing through the observer, it is a great circle. This is the meridian passing through the body, it is a great circle. This is the vertical circle passing through the body, it is a great circle. So when three great circles meet, you get a spherical triangle. And then in order to solve the spherical triangle, how many things we should know? ज्योमेट्री में स्कूल में तुमने पढ़ा होगा कि तुम्हारा नॉर्मल ट्रायंगल होता है, 2 side 1 एंगल 3 साइड है। Or दो चीज मालूम होने से तुम निकाल लेते थे। इसमें भी 3 एंगल 3 साइड हैं, लेकिन हाउ मेनी थिंग्स यू शुड नो टू सॉल्व द ट्रायंगल? Sir, almost 3 things. so 3, sir. You should know 3 things if you want to solve the triangle. तो डेक्लिनेशन से तुमको मिल गया PX, ऑल्टीट्यूड से तुमको मिल गया ZX, और हम एल्मेनाक में क्या मिलता है हमको? GHA, ग्रीनिच आवर एंगल। ग्रीनिच आवर एंगल को मैं LHA में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लोकल आवर एंगल DR लॉन्गिट्यूड से। LHA इज इक्वल टू GHA प्लस Yes, ईस्ट माइनस वेस्ट लॉन्ग हमने पढ़ा था। अब तुम पूछोगे एंगल PLHA कैसा है? अब अगर बॉडी यहां होती, शाम को वेस्ट में सेटिंग हो रही है, अगर ये भी एक PZX ट्रायंगल है ना? यस और नो? Yes, sir. सेम बॉडी शाम को। LHA is the arc of the equinoctial or angle at the pole between the meridian passing through the observer
and the meridian passing through the body measured westward. Westerly, sir. Western. तो ये LHA हो गया, एंगल P. LHA 0 से 180 है तो बॉडी ऑब्जर्वर के वेस्ट में होगी। वेस्ट में में, है। sir. LHA अगर 180 से ज्यादा हो गया तो बॉडी ऑब्जर्वर के ईस्ट में होगी। ईस्ट में हो जाएगी। ये LHA 180 से ज्यादा है Yes, sir. तो बॉडी किधर है? ईस्ट में है ना? ईस्ट में से Yes, तो sir. ये एंगल P क्या हो गया? एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस LHA. यस और नो? यस सर। तो तुम्हारा ईस्टर्ली Yes, आवर sir. एंगल है 360 माइनस LHA हो गया. तो नाउ यू कैन थिंक कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स गेटिंग आवर पोजीशन. जो हमने अभी बात की, यू कैन रिलेट दिस इन द PZX ट्रायंगल. LHA है एंगल. अब एक स्फेरिकल ट्रायंगल में तीन चीजें निकालनी है हमने. तीन चीजें अगर हैं तो बाकी हम निकाल सकते हैं. ऑल्टीट्यूड से ZX मिल गया, डेक्लिनेशन से PX मिल गया, GHA से एंगल P मिल गया. अब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं सही तरीके से, जैसे भी करके. सो विद दिस थॉट आई विल क्लोज द सेशन टुडे. Once again, if you want, read the full chapter in one flow: celestial sphere, equinoctial horizon, rational horizon, PZX triangle. ये जो मैंने डायग्राम्स बोली हैं इनको अच्छे से स्टडी करो. इसमें तुम देखोगे नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ डेक्लिनेशन, नॉर्थ लैटिट्यूड डेक्लिनेशन लेस देन लैटिट्यूड, नॉर्थ डेक्लिनेशन लेस देन लैटिट्यूड. हाँ, अलग अलग सिचुएशन में बॉडी कैसे मूव करेगी वो बताया है. और PZX ट्रायंगल भी बना के दिखा रहा है. PZX ट्रायंगल भी बना हुआ है तो तुमको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी. उसमें ट्राई टू फिगर आउट LHA क्या है, एंगल P क्या है, और जो दूसरा था वो अबव एंड बिलो द होराइजन था, ऑल्टीट्यूड अबव एंड बिलो द पोल, सर्कमपोलर बॉडीज का. तो ये फिगर्स डायग्राम सब अच्छे से समझ के आना. टुमारो इफ यू हैव एनी डाउट आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स. बट अगर तुम लोग ये पढ़ के नहीं आओगे अच्छे से तो ना तुम क्वेश्चन ठीक से पूछ पाओगे मेरे को, neither you will have a good question, neither will I be able to answer you. Is that clear, gentlemen? Yes, sir. Okay, thank you for the session today and your Thank you, patience. sir. कल थैंक यू मिलेंगे. सर।